A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students of National College of Physical Education मर्दान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आपको एक मरतबा फिर अपने सब्जेक्ट एडवांस एजुकेशनल साइकोलॉजी में खुशामदीद कहते हैं। आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आज का हमारा लेक्चर बहुत अहम है और ये रिलेटेड है अबाउट नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। जी हाँ, नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। When we talk about the nature of educational psychology, we want to make it clear whether it is science or not. In the beginning, psychology was considered to be a part of philosophy in which only soul and mind were to be studied. But the form of significance of soul and mind are indefinite, so psychology occupied prominent place in the consciousness. With the passage of time, it becomes a full-fledged science. According to Watson, psychology is the science of behavior. Skinner too has considered it to be a science of studying reactions of creatures. Professor E. A. Peel of the Birmingham University has described educational psychology as the science of education. First of all, we must know the exact meaning and definition of science. जी हाँ, नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी में ये देखा जाता है कि क्या एजुकेशनल साइकोलॉजी साइंस है या नहीं। तो इससे पहले कि ये साइंस है या नहीं का फैसला किया जाए, ख़ुद ये देखना चाहिए कि साइंस क्या है। व्हाट इज़ साइंस? द वर्ड साइंस कम्स फ्रॉम द लैटिन साइंटा, मीनिंग नॉलेज. It also means discipline and skill. According to Webster's New Collegiate Dictionary, the definition of science is knowledge attained through study or practice, or knowledge covering general truth of the operation of general laws, especially as obtained and tested through scientific method and concerned with the physical world. Science can also be defined as a systematic and controlled study of phenomena based on logical thinking and observation and analysis of visible evidence. It is free from personal prejudice, bias, liking and disliking of the scientist, and provides an objective, unbiased analysis of a thing or phenomena. It differs from philosophy and art because they are based on subjectivity or subjective analysis and have a biased and prejudiced nature. Science in itself is a body of knowledge established by specific methods of discovery and systematized into more or less established laws after careful examination. Just as we say the science of psychology, so do we say the science of chemistry, physics, biology, geology, astronomy, and so on. What is it that make all these branches of knowledge fall in the category of science? It is the scientific method or the scientific outlook
So, the characteristic feature of science is the scientific method and not the subject matter. तो साइंस को समझने के लिए ये बातें बहुत अहम है कि वो जो साइंटिफिक वे है, साइंटिफिक आउटलुक है और साइंटिफिक मेथड है, वो जो भी इल्म है अगर इस तरीक़ेकार के मुताबिक होगा तो वो साइंस है, अगर नहीं तो फिर वो साइंस नहीं है। और दूसरी बात ये है कि उसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है, कोई बायसनेस नहीं होता और कोई पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग भी उसमें मैटर नहीं करता। आइए अब थोड़ा सा ये बहस करते हैं कि व्हाट इज़ द साइंटिफिक मेथड, ताकि हम इस बात को बेहतर तरीक़े से समझें, अच्छे तरीक़े से इसको जान लें। तो देयर वाज अ टाइम व्हेन मैन लिव्ड इन प्रिमिटिव सोसाइटी, यानी जो कदीम ज़माने में रहा करता था। देन मैन्स थिंकिंग अबाउट द फिनोमेना ऑफ नेचर वाज लिमिटेड टू ट्रेडिशंस। तो उस वक्त क्या होता था कि जो उनके जो थिंकिंग थी और फितरत के मुतालिक, तो वो बहुत लिमिट होता था और वो रिवायात पर मुश्तमिल होता था जो उस वक्त ट्रेडिशंस थी। फिर इसके बाद क्या है, साथ साथ तवहमात भी होते थे, सुपरस्टिशंस, मैजिक एंड चार्म्स, करिश्मात जो है। Man thought that such things could change the course of nature. Religion also took the upper hand. When the bodily needs of man had been satisfied, his mental activity first took the form of myth or imaginative creation rather than scientific observation of facts. When he came face to face with difficulties, disease and food shortage, he thought that these misfortunes were caused by angry gods, and he tried to specify them with offering of magic and charms. Even in the advanced age of science, man resorts to such practices. अब उसके बाद क्या होता है, towards a scientific point of view. With the passage of time, the course of human history moved towards a scientific point of view. Aristotle 384 to 322 BC used both the deductive method and the inductive method to his system of logic and biological observations. However, the pioneering work in developing scientific method may be attributed to such personalities as Copernicus, Galileo, Newton, Darwin, and many others. New discoveries and hypotheses multiplied, and the scientific method came to stay for all times to come. अब ये भी आप समझ लें कि what is the scientific method? The scientific method is the method of analysis and prediction. It requires unbiased observation and experimentation. It is the method of logical reasoning, inductions, hypotheses, comparisons, and deductions. Measurement and classification of experience. What are the essential of science? अब इस सिलसिले में ये बातें भी ज़रूरी है कि हम जानें कि what are the essentials of science. Any interrelated facts organized into a body of knowledge and governed by verifiable laws may be regarded as a science. Taking a cue from this statement, we can enlist the following characteristics of science. Number one, facts organized.
means science is a body of knowledge which comprises organized fact. Number 2, वेरीफाइबिलिटी, यानी इसको वेरीफाई किया जा सकता है. साइंटिफिक फैक्ट्स आर गवर्न्ड बाय वेरीफाइबल लॉज. वेरीफाइबिलिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंस. Number 3 is universality. Yes, universality. Scientific laws are universal. However, new challenges are always there. All laws established by science may be modified on the basis of new facts discovered. Number 4, scientific method. Scientific method is the major characteristic of science. It is the use of scientific method which establishes universal, verifiable and valid laws. And the last one is predictability. Science can predict phenomena. Educational psychology as a science. Educational psychology is a science by its own right. The following features establish educational psychology as a positive and applied science. Number 1, psychology makes use of scientific method. Educational psychology does not make use of hypothetical analysis. Its method is scientific. The history of educational psychology supports this view. The work of eminent philosophers John Locke, J.J. Rousseau, Pestalozzi, Herbert, Stuart Mill, and many others, and numerous biologists, psychologists, and physicists initiated the modern science of psychology. Francis Galton, William Stanley Hall, William James, Edward E.L. Thorndike, J.B. Watson, Freud, and a host of other scientists establishes scientific principles of human behavior to declare educational psychology as a definite science. Number 2, data established on factual and objective investigation. मैं रिपीट करता हूँ, डेटा एस्टेब्लिश्ड ऑन फैक्चुअल एंड ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन. Educational psychology makes use of data which is factual and carefully investigated. The conclusions are unbiased and objective. Learners' behavior is studied under controlled conditions before any rules, laws are established. Number 3, valid verifiable principles. Valid verifiable principles. The principles of educational psychology are established after careful investigation. They are valid as well as verifiable. Moreover, these principles have universal application. जी हाँ, ये भी इसमें एक बहुत अहम बात है कि ये साइंटिफिक जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूनिवर्सल एप्लीकेशन के हामिल होते हैं. द पॉइंट नंबर 4 इज़ कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप. कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप, जो इल्लत और मालूल का आपस में रिश्ता होता है, तो वो ताल्लुक़ इसमें भी है और ये भी इससे ज़ाहिर है कि ये एक साइंस के तौर पर एक साइंटिफिक वे है, एक साइंटिफिक नॉलेज है. एवरी साइंस कंप्राइजेस कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप. सेम इज़ द कॉज विद एजुकेशनल साइकोलॉजी. Educational psychology probes into the behavior of adolescents and explains why an adolescent behave as he does behave and to what effect. Similarly, it studies the cause of mental mishygiene and what is can lead to, whether the person involved in the
student or learner the teacher. Thus, learner's behavior is analyzed in the extent of cause-effect relationship. And the last but not the least, number 5 is predictability. Science has the quality to predict what is coming or what is to happen in future on the basis of existing investigations. Thus, this is true of educational psychology too. The tests and measuring instruments of educational psychology on the basis of experiments and current results can predict the learner's future course of status. Experts of educational psychology are consistently engaged in working with human staff to arrive at certain facts which can be put into practice to predict the learner's attainment in education as well as his success or failure in the occupational field. With the help of intelligence and aptitude tests which have been standardized under carefully controlled conditions, the learner's future status can be predicted. तो ये जो आखिरी पॉइंट था पेशन गोई के तौर पर कि ये पेशन गोई जो की जाती है तो ये इस हवाले से की जाती है कि इसमें ये देख लिया जाए कि आया आज जो एक लर्नर की पोजीशन है, आज जो उसका स्टैंडर्ड है, तो इस बुनियाद पर आगे आने वाले वक्त में इसके लिए क्या चीज़ बेहतर है और किस शोबे को अडॉप्ट करना चाहिए। तो ये तमाम बातें जो है ये इसका हिस्सा है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इंतहाई अहमियत का जो हामिल टॉपिक है आज के लेक्चर में वो डिस्कस किया और वो ये था, ये देखना था कि जो साइकोलॉजी है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसकी जो नौइयत है या इसकी जो माहियत है, नेचर है, ये क्या है, ये साइंस है या नहीं है। तो हमने पहले ये डिस्कस करना है और हमने वो कर लिया कि आया ख़ुद साइंस क्या है। तो साइंस को समझने के बाद हम फैसला कर सकते थे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी साइंस में आएगा या नहीं। तो फिर उस बुनियाद पर जब हमने देख लिया तो वो तमाम पॉइंट्स इसमें मौजूद है जो कि साइंटिफिक जो इल्म है उसमें मौजूद होने चाहिए। और उस बुनियाद पर ये बात वाज़े तौर पर सामने आ गई कि ये एक अप्लाइड और ये साइंस है। तो उसमें हमने जो चीज़ें डिस्कस की वो मैंने आपको पहले बता दी तफसील के साथ, ज़रा उसकी रिव्यू सुन लीजिए। हमने उसमें देख लिया कि जो उसमें फैक्ट्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, वो वेरीफाइबल होते हैं, वो यूनिवर्सल होते हैं, साइंटिफिक मेथड इसमें इस्तेमाल किया जाता है और प्रेडिक्टेबिलिटी यानी जो प्रेडिक्शन होता है वो भी किसी बेस पर होता है, वो भी इस तरह अंधेरे में वो वार नहीं होता। तो उम्मीद है कि आज के लेक्चर में आप लोगों ने इसको समझा होगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कमिंग लेक्चर में हम एक मज़ीद डिस्कशन करेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी में इस हवाले से कि जो टाइप्स है, मेथड्स है यूज़ जो होते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी में उसके, और इसके साथ साथ हम जो ट्रू नेचर है एजुकेशनल साइकोलॉजी का तो वो देखेंगे। उसके बाद फिर स्कोप के बारे में भी बात करेंगे, स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी पे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।